but also You get can. a chance to learn Cannot from capture. best laboratory practices and having the difficulties. We were taught that the differences are beautiful and things are good. They are just different. This was the time when I realized the importance of learning from each other, from different history, and from understanding what it For means what? to be a good Abhi, citizen. for what? During my PPT के time in लिए Singapore, I would PPT often रात think about students from the Nanyang school who once visited us something in grade 6 and how they told us about their cultural celebrations, celebration of Deepavali and Durgaya, and I would very proudly go and tell my friends that even before coming to this country, I knew about these things even 15 years ago. You remember this diagram that we just had seen a few slides back? It's because there was a hustle that was never stopping. From Mira model school perspective, right? I had a social media addiction and fought against it. I had a heartbreak, fought against it. Could not clear ID, fought against it. There was a continuous drive to be better at each and every stage. And maybe there are countless of stages that I have not been able to mention just because of the size of the slide. Good afternoon. On behalf of the Oberoi Education Society and Mira Model School, the principal, students, and staff, I welcome today's keynote speaker, Mr. Gaurav Shore. We are also honored with the gracious presence of our respected chairman, Mr. Mohit Oberoi, Mrs. Amy, school manager, Mrs. Sadhna Bhalla, esteemed members of the managing committee, special guest, our alumna, Ms. Shelly Mehra, who is also an advocate for sustainable green buildings and is closely involved with green rating for integrated habitat system. Mr. Apoor Vij, Senior Director at Green Business Certification Incorporation, respected Principal Ma'am, members of the PTA, colleagues, parents, and alumni watching us online, viewers, and dear students. It is my honor to welcome you all to today's fourth edition of KB Oberoi Memorial Lecture in remembrance of Mr. KB Oberoi, founder chairman of Mira Model School. This is an occasion to pay tribute to his rich legacy and reflect on his remarkable contributions. ओबरॉय एजुकेशन सोसाइटी के भूतपूर्व अध्यक्ष और मीरा मॉडल स्कूल के संस्थापक चेयरमैन
स्वर्गीय श्री केबी ओबेरॉय की स्मृति में होने वाले इस चौथे वार्षिक व्याख्यान में हम मीरा परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। केबी ओबेरॉय सर के सकारात्मक दृष्टिकोण और दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि पिछले 50 वर्षों में यह विद्यालय एक बीज से आरंभ होकर वर्तमान में एक विस्तृत वट वृक्ष का रूप ले चुका है और पिछले 5 दशकों में हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर चुका है, जिनमें से अनेक विद्यार्थी देश विदेश में उच्च एवं सम्मानित पदों पर आसीन। Our keynote speaker is one of the young Indians making notable efforts towards sustainable development and use of local culture and traditions to drive change and progress in the country. आज के मुख्य वक्ता गौरव शोरे सर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने एक नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। वे प्रतिष्ठित स्वराज संस्था के संस्थापक हैं, जो संस्था देश भर में छात्र छात्राओं और पेशेवर कर्मियों के लिए अनेक कार्यशालाओं का आयोजन कर चुकी है, ताकि उन्हें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। यह हमारा सौभाग्य है कि गौरव शोरे सर आज हमारे बीच हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज उनके द्वारा सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और प्रैक्टिस पर दिए जाने वाले व्याख्यान से हम सभी अवश्य लाभान्वित होंगे। आपका स्वागत है सर। I request our principal, Mrs. Meenakshi San, and the prefectorial board members to welcome our chief guest, Mr. Gaurav Shore, with a planter as a token of appreciation for gracing the occasion. Now we welcome our chairman, Mr. KB Oberoi. आदरणीय साधना मैम, आपकी उपस्थिति से आज का यह कार्यक्रम और भी अधिक परिणामय हो गया है। हम आपसे प्रेरित होने और आपके अनुभवों से कुछ नया सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है मैम। I would request Principal Ma'am to welcome our alumna, Ms. Mira, who has joined us today. She has over 11 years of experience in the field of climate responsive architecture. She has handled a wide array of job responsibilities ranging from data assimilation, data analysis, monitoring and evaluation of high performance buildings. Next, we welcome Mr. Oberoi, an architect from School of Planning and Architecture with over 15 years of experience in the green building industry. हमारे बीच पीटीए मीरा मॉडल स्कूल के वाइस चेयरपर्सन राकेश शर्मा सर उपस्थित हैं। आपका प्रकृति प्रेम, लेखन कौशल, वाक कौशल और नेतृत्व क्षमता हमें अत्यंत प्रेरित करती है सर। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मैम। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किसी भी शुभ अवसर की शुरुआत का प्रतीक होता है। यह हमारी परंपरा है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है और हमारे विद्यालय का संदेश भी यही है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। आदरणीय मुख्य अतिथि गौरव सर, सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण से, चेयरमैन सर से, साधना मैम से मेरा निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलन के लिए आगे आ जाएं।
आइए इस नींव के उद्देश्य में हम सभी ये संकल्प लें कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कार्य करेंगे। Today, we gather to celebrate the legacy of a person whose tireless dedication to education continues to inspire generations. Mr. KB Oberoi was the founder chairman of Oberoi Education Society. His vision and guidance have led to the growth of the school, and he continues to be our guiding force. He guided the school from being a mere idea to the flourishing, over 50 years old institute that it is today. Mr. Oberoi's dedication and commitment in promoting education in post-independence India is unparalleled. He was born on 21st October 1926 at Kalaganj district, Kambalpur in Pakistan. He loved sports. He captained his school hockey team and also played in the Punjab University hockey team. Besides this, he was also involved in athletics, boxing, badminton, where he excelled and won many awards and trophies. KB Oberoi सर ने लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की। ओबरॉय सर एक प्रतिबद्ध शिक्षाविद होने के साथ-साथ एक कुशल एवं सम्मानित व्यवसायी भी थे। वे दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन DMA और दिल्ली उत्पादकता परिषद DPC जैसे अनेक प्रतिष्ठित संगठनों के सदस्य भी रहे। उनके हुनर और बहुमुखी प्रतिभा की पहचान केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थी। ओबरॉय सर को यात्राएं करना और नए-नए अनुभव प्राप्त करना बहुत पसंद था। यही कारण है कि उन्होंने मॉरिशस, दोहा, अबू धाबी, दुबई के अलावा UK, USA, सिंगापुर, जापान और मंगोलिया जैसे अनेक देशों की यात्राएं भी की। Mr. Gaurav Shore has graciously accepted our invitation to share insights on sustainable architecture and practice. Today's lecture aligns with Oberoi sir's lifelong passion for sustainable practices and ways which are very evident in the campus of our school. He left an indelible mark through his tireless efforts, inspiring generations. This memorial lecture series serves as a testament to Mr. Oberoi's enduring impact. We gather to honor his memory, celebrate his achievements, and continue his pursuit of knowledge. आज हम KB ओबरॉय सर के विचारों को, उनकी दूरगामी सोच को और उनके अनन्य समर्पण को याद करते हैं, जिनकी प्रतिबद्धता ने कई पीढ़ियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया है। भूतपूर्व चेयरमैन KB ओबरॉय सर की परंपरा का निर्वहन हमारे वर्तमान चेयरमैन सर मोहित ओबरॉय सर पूरी जिम्मेदारी
और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। कुछ शब्दों में अगर मैं उनके व्यक्तित्व का परिचय देना चाहूँ तो आपके नेतृत्व में विद्यालय नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है। आपकी सोच और समर्पण से हमें प्रेरणा मिलती है। आपके द्वारा रॉक क्लाइंबिंग वॉल की स्थापना करना हमें ये बताता है कि आप न केवल एक साहसी व्यक्ति हैं, बल्कि आप दूसरों को भी अपनी सीमाओं से परे जाने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। ट्रैकिंग के प्रति आपका प्रेम, हर पहाड़, हर चोटी को जीतने की आपकी इच्छा हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में चुनौतियों का सामना करने का साहस कितना जरूरी है। आपने हमें ये दिखाया है कि रोमांच का असली मतलब बाहरी जोखिम उठाना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानें। आपका जोश और जुनून हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नया और रोमांचक खोजें। आपने सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी है। आपके कार्य हमें सिखाते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रगति कैसे की जाती है। तकनीकी के क्षेत्र में नई इनोवेशन और पर्यावरण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हमें ये सिखाती है कि एक सच्चा नेतृत्व सिर्फ सफलता की राह नहीं दिखाता, बल्कि समाज और प्रकृति का भी ख्याल करता है। हमें गर्व है सर, आप हमारे बीच हैं और हम सभी को आपसे सीखने का अवसर मिल रहा है। आपका स्वागत है। श्री केबी ओबरॉय स्मृति व्याख्यान श्रृंखला में अब तक 3 वार्षिक व्याख्यान हो चुके हैं। प्रथम केबी ओबरॉय स्मृति व्याख्यान 23 अक्टूबर 2021 को हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता मिस भावना बख्शी थी, जो हमारे विद्यालय की ही पूर्व छात्रा रही। The second speaker was also a alumna, Miss Mohini Mehta, who addressed us on 19th November 2022. तृतीय केबी ओबरॉय स्मृति व्याख्यान 21 अक्टूबर 2023 को हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता हाउल गौरी थे, वे भी हमारे विद्यालय के ही पूर्व छात्र रहे। Today's keynote speaker, Mr. Gaurav Shore, is a renowned architect and a leading voice in sustainable practices. He has a career spanning over 19 years, in which he has made significant contributions to developing green buildings and shaping our understanding of the same by providing core consultancy services to schools and universities. After 19 years, over 200 green building projects and 30,000 people trained in the domain of sustainable habitats, energy efficiency, building energy performance simulations, building energy systems, code compliance, and other such projects, he not only preaches about sustainability or practices it when it is comfortable for him, but he believes we need to engage in deeper conversations about sustainability. He wishes to have people who believe in themselves and their own traditional knowledge. An architect by education and alumnus of Delhi's School of Planning and Architecture, Mr. Gaurav Shore is the founder of Swaraj, an NGO. The agenda of Swaraj is to document across 155 soil types the system of the 5 B's, namely Bhasha, Bhojan, Bhesh, Bhavan, and Bhajan, and present them back to the people of India. He firmly believes in the deep-rooted culture of sustainability that has always existed in India. India's vastness, diversity, richness, culture, and languages in their true essence propel us towards sustainability. Perhaps it just needs to be brought to the forefront once again. हाल ही में उन्होंने सीबीएसई शून्य अवधारणा विकसित की, जो स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक तरह का ग्रीन स्कूल आकलन फ्रेमवर्क है, जिसमें वे अपने पाठ्यक्रम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ लागू कर सकते हैं। साथ ही साथ वे गृह प्रशिक्षक, ईसीबीसी मास्टर प्रशिक्षक और यूएन हैबिटेट कार्यक्रमों में भी प्रशिक्षक रह चुके हैं। उन्होंने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली में अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी, जहां वे ग्रीन बिल्डिंग से संबंधित विषय पढ़ाते हैं, वरिष्ठ छात्रों का शोध कार्यों में मार्गदर्शन करते हैं
और स्वराज पर एक वैकल्पिक कार्यक्रम का संचालन करते हैं जो संस्कृति और जलवायु के संबंधों पर आधारित है। इसके साथ ही उन्हें सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया और ल्यूफाना विश्वविद्यालय जर्मनी में भी अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। After working for the Energy and Resource Institute, Terry, where he was a member of the founding team of the homegrown green building rating system GRIHA, Mr. Shore started the green building consultancy firm Sai Energy. The award-winning Krishi Bhavan in Bhubaneswar, Odisha, is one such project his firm worked on, which is 100% naturally ventilated with no air conditioning and used local materials and arts and crafts. I now invite Mr. Gaurav Shore to deliver the 4th KB Memorial Lecture. Welcome, sir. Yes, audible, everyone? Audible to the back? Super, perfect. All right, so first and foremost, thank you very much, Sadhana Badam. Had it not been for her, everything that you heard about CBSE Shunya and what we've done with schools would not have materialized. So I owe a massive thanks to her. And the journey that I have had personally in terms of health and fitness has been following the footsteps of one Mo Oberoi that we knew very long back when I was in Delhi with Apur. And little did I know that that was Mohit Oberoi, who was currently your chairperson, a very dynamic person who's kind of trailblazed, was the pioneer of fitness, of adventure sports. उस टाइम पे कोई डिकैथलॉन नहीं होता था, डिकैथलॉन सुना है ना? उस टाइम सिर्फ एडवेंचर 18 होता था. And it was like used to be like a shop like Toys R Us for adults. के अंदर एक बार घुस गए वो पागल हो गए, भाई ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, right? So that was all thanks to him. So thank you so much for having me here. And I was told that I'll have a very pleasant surprise today. मीनाक्षी मैम ने बोला था, and I didn't know कि वो क्या pleasant surprise होने वाला है. But seeing Shelly and Apurva over here was like made my day. So thank you so much for inviting them and letting them be a part of this. Okay, तो अभी तक जो कुछ भी आपने सुना, समझिए कि एक तरीके से वो सब झूठ है. मेरे बारे में बहुत लंबा चिट्ठा सुना आपने. सुना? I hope everybody is comfortable with this mix of Hindi and English, right? Yeah, that kind of expresses myself, so I do that. The title today, and I was listening to Mr. Oberoi's accomplishments, and there was only one thing that was coming in my mind. They just don't make them like that anymore, right? Like such a multifaceted, multi-talented personality, sports, education, influencing, decision-making, powerful person, right? What would be the advent of power? Would be the ability to tell the truth to yourself. अपने आप से सच बोल पाने की क्षमता, right? तो आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एक तरीके से जर्नी है मेरे जीवन की, और क्या-क्या डिस्कवर किया मैंने उस जर्नी के दौरान, और आगे जाने में हमारे को शिक्षा में खास करके क्या करना चाहिए to be able to influence sustainable development, right? संधारणीय विकास, सम्माहनीय विकास, हिंदी में बहुत सुंदर शब्द हैं सस्टेनेबिलिटी को लेकर, राइट? एंड ऑल ऑफ देम टॉक अबाउट टुगेदरनेस. सस्टेनेबिलिटी डजंट, एज अ वर्ड सस्टेनेबिलिटी डजंट टॉक अबाउट टुगेदरनेस, बट सम्माहनीय मींस साथ साथ चलना, संधारणीय मींस अगेन साथ साथ धारण करना, राइट? सो ये डिस्कवरी के बारे में कुछ आपके साथ शेयर करना है. A few critical terms to learn. I don't know if you can see the screen clearly, but keep going. 1, 2, 3, stop. No. So, okay. So 3 words to learn. Embodied energy. Everybody knows operational energy. सबको पता है बिजली की बचत करनी है, सबको पता है पानी की बचत करनी है. किनको पता है कि बिल्डिंग बनने से पहले या आपके कपड़े बनने से पहले या आपका फोन बनने से पहले कुछ ऊर्जा की खपत ऑलरेडी हो गई होती है, पानी की खपत ऑलरेडी हो गई होती है, और पृथ्वी का सर्वनाश काफी हद तक हो गया होता है. इसको हम लोग एम्बॉडीड एनर्जी या एम्बेडेड एनर्जी. दूसरा शब्द हेजेमनी. किसने ये सब सुना है? हेजेमनी. Who's heard the word hegemony? Be proud if you've heard that word. Okay, I see you've heard the word. You're the head girl.
Okay, good. You heard the word hegemony. Can you define it? Like dominance or Right. Single power has Others, right? So hegemony is on the line of domination, but it's not domination. There's the difference between hegemony and domination. क्या अंतर है hegemony और domination में? जब आप dominate हो रहे होते हो तो आपको पता होता है कि आप dominate हो रहे हो. जब hegemonization होती है तो आपको पता नहीं होता कि hegemonization होती है. ठीक है? और तीसरा एक अपशब्द भी कह सकते हैं लेकिन है नहीं, एक बहुत मशहूर मूवी के नाम के ऊपर है ये, which is called gaslighting. राइट? गैसलाइटिंग का क्या मतलब है कि आपको किसी तरीके से कन्विंस करना कि आप पागल हो रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली हो नहीं. ठीक है? तो इनको एग्जामिन करते हैं. आगे चलेंगे. सो देयर इज टू थिंग्स दैट आई वांट टू एड्रेस टुडे. राइट? आपको सुनाई दिया कि मैंने ग्रीन बिल्डिंग में बहुत काम किया है और मेरे को कई साल हो गए हैं. अभी वन ऑफ द फाउंडिंग टीम मेंबर्स ऑफ द ग्रीन रेटिंग सिस्टम. बट उस जर्नी में ये भी पता लगा कि जिसको हम ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं वो वास्तविकता में ग्रीन बिल्डिंग नहीं है. ठीक है? अब देखते हैं कि क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि वो ग्रीन बिल्डिंग नहीं है. राइट? ठीक है? दो चीजें देखेंगे, दो चीजों की बात करेंगे आज. सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस हो रहे हैं, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है. राइट? वेरी गुड, एक्सीलेंट. 11th 12th के छात्र हैं यहाँ पे, आप हैं. साइंस स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, साइंस स्टूडेंट्स हैं. राइट? बी प्राउड. हु आर द साइंस स्टूडेंट्स? ओके, गुड. ठीक, आप करिए मत, वो भी इंक्लूड कर लेंगे, टेंशन नहीं है, मैं सिर्फ देख कर. ठीक है? तो दो चीजें देखेंगे. व्हाट डज 1 किलोग्राम CO2 लुक लाइक? दिस इज ओपन फॉर एवरीबॉडी. दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय एनीवन. अगर 1 किलोग्राम CO2 मेरे सामने पड़ा हुआ हो और उसको हम एक रूप दे दें तो वो कितना बड़ा होगा. ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एम्बॉडीड वाटर, मतलब कि बिल्डिंग जब बनती है हमारी तो उसमें ऑलरेडी पानी की जो खपत हो गई होती है वो कितना होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है? आगे चलेंगे. So let's first look at what does 1 kg CO2 look like. Now that question is incorrect. Science students will know and the teachers will know कि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि भाई 1 kg CO2 कितनी जगह घेरता है, तो आप मेरे से 1000 दूसरे सवाल भी पूछोगे. तापमान कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है. राइट? तो हमने स्टूडेंट्स के साथ बैठ के कुछ काम किया और हमें पता लगा कि अगर 1 मीटर बाय 1 मीटर का स्क्वायर बना दिया जाए तो तकरीबन अगर आप उसको 700 mm या 70 सेंटीमीटर तक एक्सट्रूड करते हैं, राइट, इतना बड़ा 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय इतना बड़ा, वो 1 kg CO2. क्लियर सब? राइट? गुड. अब तापमान बढ़ाते हैं तो हाइट 1 मीटर बाय 1 मीटर को फिक्स करते हैं, हाइट बढ़ेगी. तो इंडियन कंडीशन में जब 30, 35, 40, 45, 50, 55 तक तापमान जाता है तो वो उसकी हाइट बढ़ती रहती है. कितना क्लियर है सब? ये हम सिर्फ 1 kg CO2 की बात है. आगे चलते हैं. तो मैं छोटा सा केस स्टडी दिखा रहा हूँ आपको. एक घर बनाया हमने नोएडा में. एक मेरा दोस्त है अंशुल गुप्ता, उसके लिए हमने घर बनाया और ये ग्रीन रेटेड घर है. ग्रीन रेटेड मतलब इसको सर्टिफिकेट मिल चुका है, एकदम अव्वल नंबर का सर्टिफिकेट मिला है. ठीक है? आगे चलें. तो ये बहुत खूबसूरत घर है. 555 स्क्वायर मीटर का घर है. ग्राउंड प्लस 1.5 स्टोरीज, मतलब ग्राउंड फुल बनाया और फर्स्ट फ्लोर के फुल बना दिया, ऊपर थोड़ा सा हाफ सा बनाया, बाहर अच्छा सा आंगन टाइप बनाया हमने अपर फ्लोर पे. ये 47 सेक्टर नोएडा में. ठीक है? आगे चले तो आपको थोड़ा फोटोज दिखेंगी. ये बहुत खूबसूरत घर है, एक्सपोज ब्रिक में बना हुआ है, बहुत मटीरियल बचाए हमने इसमें. आगे चले. घर के अंदर बहुत बढ़िया नेचुरल लाइट, नेचुरल वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है आपको इस घर में. आगे चले. हमने आरसीसी भी लेमिनेट कर दिया, मतलब कंक्रीट ही नहीं यूज किया हमने. जहां तक हो सके शैलो डोम्स, वॉल्टेड आर्चेस यूज करें. राइट? ये दिख रहा है आपको यहाँ पे. वो सारा रबर वुड है, व्हिच इज अ रैपिडली रिन्यूएबल स्पीशीज ऑफ वुड. आगे चलिए. ये एक और ड्राइंग रूम का एंगल है. आगे चलिए. तो हमने क्या किया, हमने लाइफ साइकिल असेसमेंट. इस बिल्डिंग का अगर आप लाइफ साइकिल जांचे तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितना निकलेगा इसका. आगे चलिए. तो ये काम मैंने नहीं किया, मेरे स्टूडेंट्स हैं एसपीए में, उन्होंने किया. एंड आयुषी, तिलक, हरप्रीत, they all got together and did this study. So we came out with 3 scenarios.
वन वाज द ग्रीन बिल्डिंग केस कि अगर ये सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग है तो इसका कितना कार्बन एमिशंस होएगा। वन इज बिजनेस एज यूजुअल केस, आज जिस तरीके से स्थिति है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है आज की डेट में, अगर वैसा चलते रहे तो क्या स्थिति होगी। और तीसरा है अल्टीमेट लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, मतलब अगर मैंने मिट्टी का घर बनाया और बहुत ही लो एनर्जी मटेरियल यूज किए तो उसका क्या इम्पैक्ट हो। आगे चले। सो वी केम अप विद दीस थ्री सिनेरियोस। लोएस्ट ग्रीन बिल्डिंग सिनेरियो वाज 143 kg कार्बन डाइऑक्साइड पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब 1 स्क्वायर मीटर का अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको आपको 143 मीटर्स आसमान में एक्सट्रूड करना पड़ेगा, तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो गया होगा जब तक वो बिल्डिंग बने, जिससे पहले आप उसमें कदम रखेंगे। और ये है ग्रीनेस्ट बिल्डिंग पॉसिबल, जहां पे हमने दीवारें मिट्टी की बनाई, छत में लकड़ी का प्रयोग किया, सरिया नहीं डाला, स्टील नहीं डाला। अगर हम बिजनेस एज यूजुअल जिस तरीके से आज हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसका अगर हमने कैलकुलेशन किया तो वो आता है 608 kg CO2 पर स्क्वायर मीटर। So 1 square meter, 1 meter by 1 meter, extruded to about 350 meters into the sky. इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, आसमान में विलीन हो गया आपके घर के अंदर कदम रखने से पहले। और अगर वो ग्रीन बिल्डिंग है तो उसमें 328 किलोग्राम कितना होगा? 1 meter by 1 meter extruded about 200 meters into the sky is the amount of carbon dioxide that has gone into the atmosphere before you stepped into the building. आगे चलिए। तो ये 3 नंबर्स हैं। अब देखिए मैं क्लास में कोशिश करता हूँ कि झूठ ना हो। एज ए टीचर मेरा ईगो आ जाता है क्योंकि टीचर का काम होता है नोइंग एंड आई रियली डोंट नो एवरीथिंग। So I like it to be that way. When students ask me and said कि Gaurav, what does this mean 143, 328, 608? मैं कहा एक काम करते हैं, I can't answer that question. Let's try and figure out how many trees does it take to absorb that particular carbon dioxide. Then I'll be able to kind of balance it out and create a picture in my mind, right? तो हमने उसको स्टडी किया। आगे चले। So what we discovered was कि under the greenest scenario of 143 kg CO2 per square meter. Remember what was the area of the house? 557 square meters. So 557 into 143, right? अगर मैंने उतना बिल्डिंग बनाया, बिल्कुल ग्रीन बिल्डिंग, तो मेरे को पूरा लाल किला खाली करके उसमें पेड़ लगाने पड़ेंगे ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो सके। आप कंफ्यूज लग रहे हो? कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? अगर लग रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कहावत है, कंफ्यूजन इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ठीक है। So 143 into 557, I will have to remove all the buildings from Red Fort and replace them with trees. Next, if I do a certified green building, then I have to remove the entire Vatican City. Tell His Holiness the Pope, sir, आप जाके थोड़ा दिल्ली में जाके हायर रीजेंसी में रुको, थोड़ी हमको वेटिकन सिटी वाइप आउट करनी है, इसको पूरे को पेड़ से भरना पड़ेगा ताकि वो ऑफसेट हो सके। और तीसरे केस में हाइड पार्क लंदन, पूरा हाइड पार्क लंदन भी मेरे पूरे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को नहीं अब्सॉर्ब कर पाएगा। मेरे को 1.5 गुना हाइड पार्क पेड़ से भरना पड़ेगा ताकि उतना कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो सके। और याद रखिएगा, अभी आपने बिजली की खपत शुरू नहीं करी है, अभी आप घर के अंदर कदम रखे नहीं हो। You've not stepped in and turned on the lights, turned on your air conditioners, turned on your mixer grinders, turned on your 108-inch television, whatever it is. You've not even gone there. You've just got the keys to your house. Clear? So आगे चलते हैं। Let's now look at what is the embodied water per square meter. Okay. Next. That's the embodied water per square meter. And this little thing that you see over here, ant size, is a human being. Left side पे देख रहे हो, छोटा। Go next. Now we might have heard of water balance diagrams. As an architect or as a green building person, every building has to make a water balance diagram. You know what that means? Like your school has a rainwater harvesting system, right? So if I measure कि आपके टॉयलेट में इतना पानी यूज होता है
रेन वाटर हार्वेस्टिंग से मैं कितना पानी जनरेट कर सकता हूँ ताकि ये बैलेंस हो जाए, इसको हम लोग वाटर बैलेंस डायग्राम बोलते हैं, राइट। अब हर बिल्डिंग को बनाने के टाइम वाटर बैलेंस डायग्राम बनाया जाता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वाटर बैलेंस डायग्राम में जो आप चित्र देखने जा रहे हो वो कहां पे फैक्टर इन होते हैं? नेक्स्ट, ये लोग क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट, ये लोग क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट, ये लोग क्या कर रहे हैं? स्टॉप, क्या कर रहे हैं लोग? Are you sure they are cleaning windows and they are not checking Jio and Airtel का सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा? आजकल वीक चल रहा है सिग्नल. They are cleaning windows. They might just be checking the signal. They are all washing glass windows. And it takes 5,000 liters of water to clean like 100 square meters of glass. Welcome to Gurgaon, where every building is made of glass. And you constantly got these people standing outside cleaning the windows. So from what angle is this building a green building? And in which water balance diagram has it been factored that, look, I'm going to spend lakhs of liters of water to clean my window, and I will use recycled water? They can't use recycled. They have to use clean water. In my air conditioning, I can use recycled water. In my flushing, I can use recycled water. But this, I can't use recycled water. वहां तो हम अभी आए नहीं हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वहां तो हम अभी आए नहीं हैं। मैं तो सिर्फ पानी के प्रयोग की बात कर रहा हूँ। He is talking about the amount of heat that the glass reflects and the amount of heat that it traps. In architectural language, we call these buildings iced tea buildings. You know why? You know how to make iced tea, ना? पहले पानी उबालो, उसमें पत्ती डालो, फिर उसको ठंडा करने के लिए रखो, फिर उसमें बर्फ डालो, चीनी डालो, आइस टी। पुराना तरीका तो यही था जब सैशे नहीं होते, right? So they are called iced tea buildings. You unnecessarily heat up the building and then you cool it down. ठीक है? आगे चलते हैं। Next. Excuse me, can you go next? Yeah, thanks. Okay, so what is the per square meter embodied water consumption and the REBA 2030 target? Now, it's very important for you to understand this. When we grow up as a country, who do we want to be? Be honest. Number one. Yeah, and currently who is number one? USA. Excellent. Thank you for being honest. Which is the country with the highest debt in the world? Internationally? Excellent, very good. Which is the country that doesn't have the money to maintain its cities and roads right now? US. Who do you want to copy? Have you been thinking? I also teach at a university in Jaipur in the Department of Critical Thinking. So let's critically think. Where are we headed? Correct, and we are going down the same journey. Very good. Right? Okay, good. Now, why am I saying REBA? REBA is the Royal Institute of British Architects. And we love whatever happens over there. They say do this and we say Aji Huzur, तुसी great हो, तोहफा कबूल करो. Right? Everybody's seen Three Idiots? है कि नहीं? बराबर है. Right? मजे करते हैं. So REBA 2030 का टारगेट क्या है? 625 स्क्वायर मीटर किलोग्राम CO2 पर स्क्वायर मीटर। मेरा सबसे वाहियात कंडीशन क्या था? 608। REBA कह रहे हैं 230 तक 625 क्रॉस नहीं करना चाहिए। 230 तक। मैं ऑलरेडी 625 के नीचे बैठा हूं। लेकिन देखते हैं कि 625 kg CO2 दिखता है। आगे चलेंगे, एक वीडियो आएगा, उसको आपको प्ले करना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं। ये है हमारा पानी का कंजम्पशन और ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग है सुपरनोवा, नोएडा में, 300 मीटर ऊंची। 300 मीटर से 20 मीटर आगे जाना पड़ेगा फॉर 1 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन। ओनली 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर। आप कोई भी 1 स्क्वायर मीटर के घर में नहीं रहते।
इंशाल्लाह कम से कम 100 स्क्वायर मीटर का तो होगा, राइट? आगे चलिए, आगे चलिए। नेक्स्ट, India's total building floor area would be around 57.6 billion square meters by 2050, from 15.8 billion square meters in 2015. Can you go next? Sorry. In other words, 41.8 billion square meters into 625 kg CO2 emissions per meter square. How much do you think we will need to plant in terms of green cover to be able to absorb that much carbon dioxide? Maybe 6 times the area of India. पूरे हिंदुस्तान में से, पूरे भारत में से सारी बिल्डिंग्स हटा दो, सारे शहर हटा दो, अगर पेड़ों से लगा दोगे तो भी उतना कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब नहीं होगा, और इसको हम बोल रहे हैं तरक्की। आगे चलते हैं। How did we get here? Let's go next. Innocence. When you were a child, there was no comparison. It was all love. It was all acceptance. It was all adventure. It was all discovery, right? Then what happened? Next. Or then you came to school and you discovered external validation. You know what external validation is? Somebody else tells you कि आपने सही आंसर किया. Someone like me. That's a सही answer. And the game of external validation begins. After that, it is your degree, your postgraduate degree, everything is externally validated. Right? Next. So that's typically what you went through. Go next. And then some of you decided to come first. That was the heights of external validation. You wanted validation from everybody. Am I treading in dangerous grounds right now? I just wanted to check. Next. An experiment that we have conducted in some of the best schools in India. So we go and ask students, what do you want to be when you grow up? Go next. And we get these answers. Doctor, engineer, lawyer, architect, teacher, astronaut, scientist, politician, chef. These days, master chef is quite hot. Automobile designer, air hostess, chartered accountant, entrepreneur, fashion designer, screenwriter, director, actor, pilot, author, model, blogger. Delhi mein fortunately people say politician, right? And Bombay mein fortunately people say director, actor, producer, stuff like that. Right? So good. So old legacy games are still on. Then we ask students after about 5 minutes, what do you need for a sustainable planet? And they give us these answers. We've done this in some of the best schools in the country. Next. Okay, let me read some of them. Go back. Natural farming, hand weaving, clean air, no pollution, vegetable dyes, natural materials, afforestation, forest protection, hand carving, sustainable jobs, forest living, green buildings, banning plastic, stopping construction, animal husbandry, joint families, joint ownership. Brilliant, huh? Students came up with this. Joint ownership. I was like, wow. Local festivals, unbaked pottery that's unbaked, right? Natural fibers, communities, folk music, folk dances, local food, seasonal living, recycling, upcycling, vocal for local, need-based, sharing. Next. Next. Sorry, just go back up. Oh, you can't see over here. What did you notice between the two slides? There's no connection between the two. We want a sustainable future. None of the people want to work in sustainability. Nobody even heard of sustainable professions. They want organic food, but they don't do it. They want oxytocin, non-injected milk, but nobody wants to bring up a cow. And you saw Mr. Oberoi standing right next to the Gaushala and the cow. Amazing, huh? We want cities look like this. Go next. And look like this. And this is a satellite image of Bangalore. Go next. This is a satellite image of Hyderabad. We play a game when we are working with students. We say, spot the tree.
You guys are safe because you're in this part of town which is really clean. But that's a part of Delhi. This is Hyderabad. Go next. This is another part of Delhi. Spot the tree. Go next. Now this is also very interesting because these days air conditioning has become the default lifestyle choice, right? Everybody wants an air conditioner. How much heat does an air conditioner's backside give to the environment? Can you give me a number? Give me a number, somebody. सब खड़े हुए हैं एसी के पीछे, एसी के पीछे की गर्मी आजमाई है, राइट? कितना हीट होता है? कोई बता सकता है? You can't even stand over there. क्योंकि अगर दिल्ली का तापमान 50 डिग्री है, तो वो आउटडोर यूनिट का तापमान कम से कम उसके ऊपर 20-25 डिग्री होना चाहिए to be able to work efficiently as a heat pump. So that's what this lesson is trying to tell you. It's trying to tell you if the outdoor temperature is 35 degrees Celsius under ideal conditions, then the outside temperature, that is the condenser side, 75 to 95 degrees Celsius is when the refrigerant enters the air conditioner, and 40 degrees is when it goes back into the air conditioner, average temperature being 75 degrees Celsius. And the air conditioning industry is saying we will sell at least 1 crore air conditioners every year so that we are profitable and we contribute to the GDP. Any commerce students over here? इसको बोलते हैं जोर का झटका, धीरे से. Go next. And of course we have the consequences. Go next. So see, Mohit, this is the real rock climbing that we can do in Delhi. We've got our own mountains, man. Gazipur landfill है, Okhla landfill है. आपको जिधर जाना है बताओ. आपके कुक्कड़ का nearest mountain के पास लेके जाऊंगा, वहाँ पे climbing करेंगे. Go next. Next. Oh, one back. Now, this is a very interesting map. I want you guys to take a copy of this PPT. Okay? It's on that computer at the back. A lot of us feel that maybe the solution lies in being connected. Right? Internet. IoT, Internet of Things, AI. How many of you know that the internet doesn't fly through the air? It goes through cables. And those cables are all underwater. And if you look at the cable map of the world, the submarine cable map of the world, you can immediately see how skewed the world is. We think that internet will lead to equality. It will lead to everybody getting access to information. That's not true. It's all on the peripheral areas. It's all in cities that have access to a lot of capital. The undersea cable map does not show equality at all. It shows the opposite. Extreme concentration of power. आगे चलते हैं. इसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, बट ये भी बहुत अहम है देखने के लिए, क्योंकि ये एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यहीं पे भोपाल के पास. इन्होंने रिसर्च किया 2009 में और इन्होंने निकाला कि हमारा नेट एनर्जी कंजम्पशन और कन्वर्जन लॉस, ये देखना ध्यान से, नीचे बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा है प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन 475 एक्साजूल्स, कन्वर्जन लॉस 420 एक्साजूल्स, which means if you click once more, 88.42% of the energy all over the world is wasted. Only 11% is converted into something useful. Now, when I say 88.42% of the energy is wasted, what does it get converted into? Sorry? CO2, CO, SOx, NOx, PM10, PM2.5, heat, right? 88.4%. You think global warming is going to change? No, it's not. It's going to stay the same. Right? Let's go next. What are the developed countries saying? Go next. No, one back. Now this is very, very interesting. This is what the developed countries are saying. So if you have a QR code scanner, you can scan this, and it will take you to this Time magazine article, which says ACs feel great, but it's terrible for the planet. Here's how to fix that. So Time magazine is now saying, cut it out. The last line of this article is beautiful. It says, it's better to adapt and sweat rather than air condition. Our future may depend. Can you believe it? Can you believe Time magazine is saying that? And you guys are lucky
that you're not in a air. You don't even realize how lucky you are. You don't realize. These days people demand air conditioned schools. Now how much heat are they turning out into the atmosphere? And they're converting people to people who have zero environmental threshold. You don't have a thermal adaptive capability. Right? Or you have something else to say? That's alright. This is just an opinion. Remember that. Right? Go next. I won't get into this. Go next. Oh, back. Now, this is important to know. Can you click slowly? I think you'll have to click a couple of times more. Right? Yeah, that's it. Stop. Now, this is what is important for you to know. The world has 29 geoclimatic zones. Well, geography teachers. Let me see the geography teachers. Any geography teachers? No geography teachers. The world revolves around geography, guys. You need to remember this. No geography, no world. Your lives respond to geography. 29 geoclimatic zones in the world. Our country has 17 out of those 29 geoclimatic zones. But if you look at our agroecological zones, we have 21 agroecological zones. And if you look at the food map of India, we have 31 food types. Because if you look at the soil map of India, we have 155 soil types. And if you look at the language map of India, we have 1,635 languages. And languages change with soil. Coast pe pani badle, do coast pe pani. Go next. Swaraj. भाषा भोजन देश हवन एक इकलौता नहीं, कोस कोस पे बदलने वाला। हरियाणवी नाम की कोई भाषा नहीं है। हरियाणा में 16 सब डायलेक्ट्स हैं। यूपी में सैकड़ों सब डायलेक्ट्स। And we are not preserving our local culture and our local language. You know why I'm saying we are doing that? We are not doing that because you can see समान्यता दिख रही है ना। सब जगह वही बिल्डिंग बना रहे हैं, वही सड़कें बना रहे हैं, वही गाड़ियां खरीद रहे हैं, लाइफस्टाइल का भी थ्रेशोल्ड वही है। Fortunately, अब हमारे पास NEP 2020 आ गया, which allows for integration of local culture into the education system. And I'm sure you guys are doing a lot of work on it. We're doing a lot of work on it. Applying it in schools and in universities. So we're part of a team that's doing it in SP as well right now. Now, what is important to know is that local culture is a function of climate and soil. आपके होठों पे अगर नमी ना हो, तो आप नहीं बोल सकते। अगर आपके गले में नमी ना हो, तो आप नहीं बोल सकते। It is a function of humidity and temperature that determines your prosody and how you pronounce things. Everything that you do is a function of the climate. What you drink, what you eat. Have you ever seen a non-air conditioned Starbucks? No, you haven't, right? Because coffee is a drink that's grown in high altitude regions. It's best consumed in cold climate countries, not in India. Have you ever seen a non-air conditioned Pizza Hut or Domino's? No, you haven't. Have you ever seen a non-air conditioned sushi restaurant? No, you haven't. Very interesting, huh? Interesting that without this so without air conditioning, it doesn't work. Go next. So 4 C's to kill for a green future. And I don't know how to do this. I'm just as confused because I grew up through this. How do we kill this for a green future? Class, competition, comparison, and consumption. I'm saying kill it. And 4 C's to create for a green future. Culture, collaboration, community, and contribution. Can we start collaborations in class? Can we start buddy systems? फौज में होता है, पता है? Buddy system होता है, फिर platoon आता है, फिर company आता है, फिर battalion आता है. Can't we do that? Can't we have buddies in class, then a small team in class? Everybody makes sure that you all study and score your grades together. It's not one versus the other. It's one standing for the other. Only then can we begin to have citizenship that is going to be able to take a stand for the other. Environment तो बहुत दूर है, लेकिन
Okay, good. Go ahead. How? Okay, so now I'm going to say something that's an opinion and it's not a fact. You guys should come up with your own solutions. I'm only sharing with you what we've been able to do so far, right? Go next. So this is what I was thanking Sadhana ma'am for, the CBSE Shunya curriculum, right? Imagine the possibilities if 28,000 schools collaborated instead of competing against each other. By students, of students, for students, strictly no burdening the teachers. Teachers, this is for you. You will not be involved in CBSE. You are only going to do one thing, go to class and give your lesson. Student's job is what? Receive the lesson from the teacher, open the Shunya book, see where you can apply that lesson in real time on your school premises and go apply. Collect the data, upload it onto the CBSE portal, which we are still creating. Imagine in the world if Modi ji goes travel somewhere and he logs into the portal and he's showing it that 28,000 schools are real-time feeding data and showing the world how to conserve energy, how to conserve water, how to conserve waste. Can you imagine? All being done by you. Opportunity to apply classroom lessons to real-life problems, opportunity to go beyond boundaries, truly out of the box. We are saying no, get out of your school, adopt your neighborhood, adopt your locality. Don't just restrict it to the school. Invite parents and outside people into the school and tell them, we'll teach you how we did it in school. Come, we'll show you. We've done it. National level data collection to feed into our net zero 2070 goals. Next, the Pride Project curriculum. Intergenerational knowledge transfer. Very, very important. I learned too late in life that sustainability knowledge already exists with my grandparents. I learned too late in life that sustainability knowledge already exists with my parents. मेरे माता पिता को मेरे से 1000 गुना ज़्यादा पता है sustainability के बारे में। और कम से कम 30 साल की उम्र तक मेरे क्लियर था कि अब मैं अपने माता पिता से ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ। खत्म हो गया। शुक्र है भगवान का कभी-कभी लाइफ में कुछ थप्पड़ पड़ते हैं जब रियलाइज होता है कि अरे पेरेंट्स आर गॉड। They literally are. Rooted in local context, community and collaborative education with minimum degrees of separation from nature. This is very important to understand. आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूँ ना आपने ये नेम टैग पहना होगा, इस नेम टैग का degrees of separation from nature कितना होगा? मतलब कितनी चीजों को एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करना पड़ा होगा ताकि फाइनली ये नेम टैग बने? आप शायद उसका आंसर ही ना कर पाओ, राइट? लेकिन अगर हम कोलैबोरेट करके ऐसे सॉल्यूशंस निकालें जैसे हमारे पूर्वज करते थे, भाई गेहूं निकाला, गेहूं का जो शाफ्ट बचा उसको वीव किया और मैटिंग बना दी, उसका टोकरी बना दिया, उसका स्टीमर बना दिया, उसका लिडल बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया। डिग्रीज ऑफ सेपरेशन कितना हुआ? 2। मिनिमम कन्वर्जन लॉसेस। स्टॉप इंडिविजुअल कंजम्पशन एंड स्टॉप इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन। These days the real estate sector will fuel the fire by saying आपका खुद का घर होना चाहिए। क्यों? मेरे को तो जब रियलाइज हुआ nothing better than parents, I moved back into the house with my parents. So now we are one to build family. And now we share resources. You know the latest trend these days, have you noticed that girls should wear pink, boys should wear blue? You noticed that, no? That's simply to kill hand-me-down clothing. Because all our traditional clothing was multicolored. It was not blue and pink. अब एकदम से नहीं लड़का है तो नीला, लड़की है तो कहाँ से आया ये? थोड़ा छानबीन करने के बाद पता लगा कि अरे ये तो मार्केटिंग गेम है। So next, what could that lead to? That's an interesting question, no? Next, I want to leave you with this. These are revenue figures from 1875 under British India. Bengal presidency, Bombay presidency, you know, that time states नहीं होते थे, presidencies होती थी, right? ध्यान से देखिएगा, Bengal presidency, Bombay presidency, Madras presidency, United Provinces, Punjab and Central Provinces. Look at the amount of revenue that was collected by the British back then. How many of you heard this घिसा पिटा term that India is सोने की चिड़िया? सबने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है हमारे पास कितना पैसा था? नहीं, ये दिखाता है
5 million pounds sterling being collected in Bengal Presidency in 1875. That equals in value to 595 million to 10 billion 730 million pounds sterling today. Just to give you an idea, if you look at the Madras Presidency, 357 to 6.4 billion pounds sterling, that is just half of the revenue that we are collecting from the Tamil Nadu today. Now, this is not the thought I want to leave you with. The thought I want to leave you with is very simple. In 1875, of course we had the metro. Of course we had mobile. Of course we had optic fiber cables. Of course Ambani ruled the roost. Of course we had the Bombay Stock Exchange. Of course we had railways. Of course in 1875 every city had its own airport. And some of them like Delhi had two. Of course we had highways and roads. Of course we had trucks. Of course we had the transport system that we have today. Of course everybody spoke English. Of course everybody went to school. I hope you got the joke. Go next. Good. It's 1:06, so I can still take a few questions before I run out of here. आपने जितना मेरे को इम्पोर्टेंस दिया है, उसका भी मिट्टी पलीत होने वाला है, क्योंकि मैं अपने डॉटर की पेटीएम के लिए जा रहा हूँ। जीरो इम्पोर्टेंस मिलेगा वहाँ पे, ठीक है? मतलब लाइन में खड़े हो, wait for your turn, right? So I have to bolt across town, and I'm very grateful to Meenakshi ma'am to have accommodated this change because I really messed up my schedule. But I can take a few questions. So anybody who has questions? Yes, I see a hand up. Sir, you talked about the 4 C's that we need to kill, and 2 of them were consumption and competition. I'm saying this as someone who is obviously not for massive overconsumption or the neoliberal society that we have, but how can we kill the 2 human tendencies to consume and to compete? That's a very good question. Yeah, we need to hear it. So, do we have a portable mic? No, repeat. Can I repeat your question for everybody? So I'll do that if that's okay with you. We've got a mic, right? Our question was very simple. 2 of the C's that you mentioned were competition and consumption. How can we kill that? She's saying, look, I agree with the fact that you shouldn't overconsume. By the way, you answered your own question. The starting point of killing consumption is to stop overconsumption. Remember that it needs to go through a progression. We tend to think instantaneously. अभी कैसे किल कर लूं? नहीं, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है. हम तो आज एक ऑडिटोरियम में बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं. तो हम मात्र प्रारंभ कर सकते हैं कि ठीक है, ओवर कंजम्पशन को कंट्रोल करना ही बहुत बड़ी बात है. अगर हमने कर लिया तो फायदा है. I mean, look at Amazon and Flipkart, and now I believe you can order clothes on Blinkit, right? So that's the beginning. That's you answer the question. Questions? Yes. He's asking about 1 kg CO2. 1 kg CO2. So, do we have any measurement by which we can evaluate as to how much devastation can be made by 1 kg CO2? That's a very good question. That's a good question. We don't, unfortunately. The studies are not done on the basis of 1 kg CO2. The studies are done on the basis of global emissions of CO2. So they are done in terms of millions of tons of CO2. But one simple point. Would you know the answer to that question? I know if you hit 1000 ppm typically in an air conditioned classroom, just to let you know. If you have an air conditioned classroom and you close the doors, class शुरू हो गई, आपने दरवाजा बंद कर दिया. Normally 20 मिनट के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 1000 ppm क्रॉस कर 1000 ppm आपका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए for more than 10, 15, 20 minutes. But your class will be about 40 minutes. That means you get overexposed to 1000 ppm CO2
in an air-conditioned classroom typically. Even if there's a fresh air intake, then there'll be other pollutants that your body is giving out. So I don't have the 1 kg answer, but I know that if you go into several kgs, then you'll lead to temperature rise, global emissions, climate change, rivers drying, everything that we're experiencing today. But that's a good question, and I'm going to take that question back with me to be able to answer it for myself. Because एक तो इतना होता है ना, पता तो लग गया ना 1 kg CO2 कितना होगा? Yes, absolutely. Absolutely. So the simplest thing to do in that case is to start by monitoring your बिजली का consumption. क्योंकि अभी स्कूल तो बन गया, and good news is स्कूल 50 साल पहले बना था, right? इसका मतलब ये बिल्डिंग और कार्बन डाइऑक्साइड, embodied कार्बन डाइऑक्साइड नहीं emit करेगी. अब जो करेगी वो ऑपरेशनल लेवल पे करेगी, right? And you've got an excellent green cover, so you can actually start doing the balance study as well. You can start looking at how much you are emitting by virtue of कितनी बिजली की खपत हो रही है आपकी, उसमें एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अप्लाई करते हैं और आपको कार्बन डाइऑक्साइड नंबर्स पता लग जाता है, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बोलते हैं, राइट? पानी का कंजम्पशन स्टडी करके हम ये भी देख सकते हैं कि पानी की मोटर कितनी चलती है, वो भी बिजली की वजह से चलती है, उसका भी कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, राइट? फिर हम देख सकते हैं हम नोटबुक पेन्स कितना यूज कर रहे हैं, उसका लाइफ साइकिल एनालिसिस करके उसका भी कार्बन डाइऑक्साइड. यू कैन डू अ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वेंटरी across several things, and CBSE Shoonya includes that. That's the beauty of it. And then you can start reporting, and then you can see how you can reduce it. By the way, in this school, because you're already in an optimized environment, it will be very difficult to reduce the air conditioning consumption. And I'll tell you why. Ministry of New and Renewable Energy came up with something called the Green Campus Master Plan Scheme. And they said that, you know, हमारा जो per square meter energy consumption आपका एक threshold के नीचे होना चाहिए. तो हमने जल्दी से जाके SPA जहाँ से हम लोग पढ़े हुए हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का ऑडिट करके, और फिर जाके हॉस्टल का ऑडिट करके, और पता लगा हमारा जो कंजम्पशन था वो जो थ्रेशोल्ड मिनिस्ट्री ने सेट किया था उसके 6 गुना कम है. तो IIT पवाई में जब प्रेजेंटेशन हुई तो हमने जाके उनको नंबर दिखाए कि हमारा कंजम्पशन है 12 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर पर ईयर. और वहां पे हम मिनिस्ट्री वाले बौखला गए कि भैया ये इतना कम कैसे हो सकता है? तो यार खुली खिड़कियां हैं, एयर कंडीशनर कुछ है नहीं, आधे टाइम लाइट काम नहीं कर रही होती, बिजली आती है जाती है, तो क्या बिजली का कंजम्पशन होगा क्या? So now why I am sharing this with you is because we should be proud of the fact that we have buildings that consume less energy, but we don't do that. We are ashamed of that fact. Nahi, when compared to a air conditioned building, we are very low. We might just be poor. That's not the case. That's not the case. लोग मकान बनाने में देखता हूँ उसमें ज्यादातर ग्लास का यूज करते हैं. आगे जो ग्रिल बनी है वो भी सारी ग्लास की है, और आप टाइलिंग का यूज कर रहे हैं. तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा ब्लॉट है एनवायरनमेंट के ऊपर, वो सारा रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है. जो हमारे ट्रेडिशनल जो मकान बनते थे, इवन सीमेंट से जब बनाते थे, वो बहुत ही मुफीद हुआ करते थे और बहुत ही उसमें मतलब ठंडक रहती है. I can't deny that, and I feel that if I was to address that question, एक चीज बहुत जरूरी होती है लोगों की विचारधारा को बदलने के लिए. बाकी लोग कांच के डब्बे बनाएं, सीमेंट की बिल्डिंग बनाएं, ओवर कंजम्पशन करें, वो क्या बदलनी चीज जरूरी है? माइंडसेट को बदलने के लिए सबसे पहले क्या बदलना पड़ता है? कॉन्फिडेंस पे, and being happy of what I have and being proud of it. सुपर हेजेमनी आ गया, गैस लाइटिंग आ गया, लेकिन उसके लिए बदलना क्या पड़ता है? नहीं, वो भी एक इम्पैक्ट है. वास्तविकता में क्या बदलना पड़ता है? थिंकिंग को बदलने के लिए क्या बदलना पड़ता है? कंपैरिजन को करने के लिए क्या बदलना पड़ता है? लाइफस्टाइल को, एजुकेशन में क्या बदलना पड़ता है? करिकुलम में क्या बदलना पड़ता है? भाषा बदलनी पड़ती है. You have to change the language of the people. That's the first step that you have to take. Then you have to convince them that other language is cooler, and what the other language is saying is way cooler.
So when you ask me, how do you generate e-waste? So you first change the language of the people, and you convince them that iPhone 629, whatever the latest iPhone is better than iPhone 628. Can I have the last word? Please, absolutely. So just no, he's going from this side. So we have three young people who are connected and rooted and have emerged. I don't know why she chose this path. I would request you to please mentor. We are short of mentors. If we can form a group of children who are genuinely going to be change makers and adopt the language of sustainability. You're talking about language, and if we have those children, they can connect directly with you in their time and not between 8 and 2 when they after that they go for revisions. They have to feel to be, Swaraj, to be get connected. We want our children to and our teachers because they are the ones who are impacting children every day. So are you open to volunteers, to mentoring? Absolutely. To mentoring and to convert this. And I'm sure most of our children sitting here do not know that the GRIA awards that we've been winning and applying for are not just Bimla ma'am and Rajneet ma'am driven. These children have actually, they have not come back to tell the children the story of sustainability. So this needs to go on. This was. I think you guys are very lucky to have Thank someone you. like Shelly as an alumni, right? And now he doesn't have a choice. I don't have a choice. I'm unable to work. And so I'm always on call. Yeah. So Gaurav, I need you back for a session with the parents. I think you need to talk to the parents because we get a demand every time PTM is AC नहीं है, very hot, very humid, people are fainting. So एक session उनके साथ करके just get their mind clear. I'm very clear that पसीना बहाना is very important. Absolutely. Maybe I'm old school, but that's how it is. No, this is perfect. I've got to the extent of telling schools that I've worked with, including like Hazrat values. First session with parents. Children know. They know these things. The teachers know these things. It's the parents that need to know. He knows the answers to that question. He knows the answers. Sir, one more experience I want to share. एक environmentalist है, wildlife फोटोग्राफर है, माइक पांडे. उनका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत अच्छा था. उन्होंने लिखा था कि जो चीजें नेचर ने हमें बचाने के लिए पैदा की हैं, हम धीरे धीरे उनको किल करते जा रहे हैं और एज ए रिजल्ट उसके रिपरकशंस आ रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर से होने वाली जो बीमारियां हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं. तो मच्छर को मारने के लिए नेचर ने बनाया फ्रॉग मेंढक. ठीक है, आज आप देखिए कॉन्क्रीटाइजेशन इतना हो चुका है सिटी में, यू वुड नेवर हैव सीन फ्रॉग. मतलब लास्ट 20-30 ईयर में हमने फ्रॉग नहीं देखा. हमारे जैसे लोग देख लेते हैं बाकी सही, लेकिन आम आदमी को नहीं देखता. अच्छा, वो क्या है, वो उसका लार्वा जो है वो खा जाता है खाने को, वहीं पर मच्छर क्रांति हो गया. अच्छा, मच्छर को मारने के लिए फिर लिजर्ड बनाई नेचर की. आज लिजर्ड हमारे कमरे में आ जाए तो हम हाय तौबा मचा देते हैं कि लिजर्ड कंप्लेंट लॉन्च कर देते हैं. हालांकि वो फ्रेंडली है हमारी. वी शुड इनवाइट कि आओ भाई, आओ मच्छर, हमें बचाओ डेंगू और उससे. फिर मच्छर से बचने के लिए नेचर ने फिश बनाई. आज मेरी वाटर बॉडी फिशिंग है. तो जो चीजें नेचर ने हमें बचाने के लिए बनाई थी, हम उनको बहुत ही मतलब बर्बरता से समाप्त करते जा रहे हैं और उसके आगे नतीजे तो आगे. For the young people, for all of you, you should follow Gautam and Goel, Mike Pandey's son and daughter. They're young, they're our age, but they're making amazing films on wildlife conservation. Not just that, but also cultural preservation. So please follow Gautam Pandey and Goel today. Yes, last question. So then I have to run. I won't take much of your time, sir. I just need to ask. Me and my friends, we have just started a startup to promote sustainability. Like it's clothes swapping. So the thing is, we are lacking how we can promote it further because अभी भी people समझते हैं कि हम क्यों एक दूसरे के कपड़े पहने. The last 2 months we have just started by the name These Style. So if you can help us, like how we can promote this. That's a longer conversation. So we should speak.
But you guys should see the brand called All Earth, AULEARTH. They are making high-end jewelry from recycled metals. And it's very similar to your ideology. But see how they were able to scale up and popularize. Because we just need to But make we the should minds speak. of the people because we are just lacking from. Yes, I understand. But it's a beautiful vision. It's a very good vision. Sorry, yeah. Then my question was that whenever we talk about sustainability or sustainable development, we tend to assume that all these things have been borrowed from Western culture, but as you pointed it out, that these things already exist in India's rich cultural heritage. So can you please tell us more about that? How can we step back into that age of sustainability and development? Okay. So first and foremost, you need to know that there is no stepping back. That we are with everyone, right? It's stepping sideways. हमें लगता है कि अपनी परंपरा को अपनाने के लिए हमारे को पीछे की तरफ कदम लेना पड़ेगा। आपको पता है कि 62% इंडिया शहरों में नहीं रहती, गांव में रहती है या आदिवासी क्षेत्रों में रहती है। वो तो ऑलरेडी उस प्रणाली के थ्रू गुजर रहे हैं। आप किसी भी गांव में चले जाओ, दिल्ली के बाहर हम लोग गांव में काम करते हैं, दिल्ली से 55 मिनट दूर गांव जो है जितने, वहां पे ये सारी परंपराएं अभी भी जीवित है। हमारे को पीछे कदम रखने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ साइड स्टेप करना है। और वो लोग जितनी रैपिडली वेस्टर्नाइज हो रहे हैं ना, यहाँ पे शायद ज्यादा जागरूकता है। We are still aware and going back to our tradition. They are rapidly giving them up and saying नहीं क्लास की बिल्डिंग बनाओ। मोदी नगर के आसपास के गांव देखो आप, पलवल के आसपास के गांव देखो आप। तो जब तक हम तो स्वराज में हम यही कोशिश करेंगे। क्या आप आंगनवाड़ियों के साथ जुड़ सकते हो? क्या आप गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ जुड़ सकते हो? क्योंकि वो लोग आपकी तरफ ना क्यों देखते हैं, उनको लगता है आप यहाँ पे हो। तो अगर आप बोलोगे कि भाई हम तो अपनी परंपरा फॉलो करते हैं, पहले वो बोलेंगे भाई बाबा का पता नहीं कहाँ से आया, उसके बाद वो बोलेंगे यार कुछ तो बात होगी हमारे में, उसके बाद वो एक्सेप्ट करेंगे। So it's going to take some time. So I feel collaboration needs to happen between rural and urban areas as well. It's very important for that to happen, right? So no stepping back, just stepping side. Yeah, great. For elaborating upon the interfaith relationship between culture, collaboration, community, and conservation. Those were really an eye-opener. The lecture was really an eye-opener, and those were some insightful and thought-provoking words. Before we proceed further, I would request our principal ma'am, Mrs. Meenakshi sir, and the prefectorial board member to welcome Mrs. Amy Jacob Oberoi with a planter. I request ma'am to extend welcome to Mira Nursery in charge, Mrs. Neha Gandhi, with a planter. हमारे बीच पीटीए मीरा मॉडल के वर्तमान सचिव चित्रप्रीत कौर मैम उपस्थित हैं। मैं हमारे प्रीफेक्ट से गौरव सर को जल्दी जाना है, वरना ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन था और लंबा होने वाला था, और निश्चित रूप से हम सभी के मन में प्रश्न है क्योंकि सेशन ही इतना बढ़िया था। मुझे लगता है एक और सेशन रखने की जरूरत है हमें आने वाले समय में। Next, I invite Mr. Mohit Oberoi and Mrs. Oberoi to present a memento as a token of appreciation to our keynote speaker. गौरव सर, मैं साधना मैम से निवेदन करूंगा कि हमारे आज के विशिष्ट अतिथि शैली मैम और अपूर्व सर का
functionals. धन्यवाद। हमारे बीच पीटीए के पूर्व सदस्य वालिया सर भी उपस्थित हैं। वालिया सर, आपका हार्दिक स्वागत है और आपके विचारों से हम जितने समय हमने साथ में काम किया हम प्रेरित होते रहे हैं और आपका बीच बीच में हमें साथ मिलता रहता है, डांडिया नाइट हो या अन्य कार्यक्रम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मीनाक्षी मैम को आमंत्रित करना चाहूँगा। On behalf of our chairman, Mr. Mohit Oberoi, Mrs. Annie Oberoi, manager Ms. Sadhna Bhalla, staff members and students, I extend my warm gratitude to Shri Oberoi for gracing this occasion. With his words of wisdom, path-breaking ideas, and zest to inspire change in others, I'm sure we are going to have many more Greta Thunbergs. So I won't let you miss your classes for Friday to Future campaigns. Shri KB Oberoi was a persona par excellence. In his quiet, gentle way, he provided vision and road to Mira Model School, and his spirit lives on, and his legacy is being carried forward by our chairman, Mr. Mohit Oberoi, Mrs. Dolly Oberoi, our vice chairperson of the board, and our manager, Ms. Sadhna Bhalla, and trustee, Ms. Kiran Vasudev. The guiding spirit of Mira invigorates respect, and its spirit imbues all that we do and achieve. I extend my warmest thanks to Ms. Shaili Mehra, Mrs. Annie Oberoi, our Vice Chairperson of PTA, Mr. Rakesh Sharma, Ms. Chirpreet Kaur, Ms. Praminda Langer for sparing their time to be with us here today. The warmest kudos is for Team Mira, for everyone who put their heart and soul into organizing this lecture. Thank you so much. Thank you for your presence. Have a good day. I request the members of the prefectorial board to escort our guests. Prefects, sitting in the floor. ये उसका देख उसका हो गया 52 लोगों ने देखी है।